So hello everyone, welcome back again with another video. So today we are going to discussing agriculture. So today we are gonna learn about agriculture and its types. So what we will learn in this lesson, let's see. Objective: learn about the various types of farming developments in agriculture in two different regions. Overview: agriculture is a primary industry that employs about 50% of world's population, and it includes growing crops, fruits, vegetables, flowers, and rearing livestock. Favorable climate and topography of soil are important for agriculture. We can broadly classify all farming into subsistence farming and commercial farming. So first we have to know what is agriculture. The transformation from a plant to a finished product involves three types of economic activities. एग्रीकल्चर मतलब क्या कुछ एक प्लांट से लेके लास्ट स्टेप तक, यानी जो लास्ट प्रोडक्ट जो फिनिश प्रोडक्ट होता है लास्ट स्टेज, वहाँ तक पहुँचने के लिए थ्री टाइप्स के इकोनॉमिक activities हैं. First is primary, secondary, tertiary. So first we have to know primary activities. Primary activities include the extraction and production of natural resources like agriculture, fishing and gathering. Primary activities क्या include करता है? Primary activities is is used to production of natural resources. Natural resources are those that are used for our daily life. हम लोग उसे डेली लाइफ में देखते हैं, आपको यूज़ पड़ता है लाइक फार्म एग्रीकल्चर से वीट प्राप्त होता है. वीट से हम लोग फ्लोर खाते हैं, आटा खाते हैं, फिर फ़िश खाते हैं. बहुत सारे चीज़ होते हैं जो हम लोगों को डेली यूज़ चाहिए. यानी नेचुरल रिसोर्सेज में जो जो चीज़ आता है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में प्रोडक्शन उसका किया जाता है. Second is secondary activities. The processing of these resources, example manufacturing of steel, baking of bread and weaving of cloth. Third is tertiary activities. Provide support to the primary and secondary sectors through services. Tertiary activities is providing support to the primary and secondary activities through their services. Example transport, trade, banking, insurance and advertising. Agriculture is a primary activity. Favorable topography of soil and climate are vital for agriculture activity. So let's know about farm system. So there are four steps to know what would happen to grow the any wait a minute. So farm systems, their following steps are: agriculture or farming can be looked as a system. Second is important input seeds, fertilizers are used and for laborers. आप लोगों को पता ही होगा कि जो मतलब एग्रीकल्चर कर रहे हो तो उसमें सीड्स लगता है, फर्टिलाइजर्स लगते हैं, पेस्टिसाइड्स लगते हैं जो वीड्स को मारते हैं. जो वीड्स क्या है, जो मतलब अनवांटेड पार्ट्स है प्लांट्स के जो उग जाते हैं, जो मतलब वाइल्ड प्लांट्स कह सकते हैं, वो मतलब डैमेज कर सकते हैं आपके जो फार्म आपने बनाया है, वही वीड्स कहलाता है. लेबर लगता है सारी सीड्स को लगाने का. अगर आप बहुत बड़ा लैंड ली, उसमें आप अकेले थोड़ी ना लगा सकते हैं, आप लेबर को बुलाते हैं और आप उसी से करवाते हैं, तो ये सब भी लगता है. सेकेंड स्टेप. थर्ड इज ऑपरेशन इन्वॉल्व प्लोइंग, शोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग. ये सब किया जाता है. फर्स्ट स्टेप इस होता है प्लोइंग, जो मतलब वीड्स है या फिर अनवांटेड ग्रास पार्ट्स है जिसका कोई ज़रूरी नहीं है, वो होता है. शोइंग में क्या होता है, सीड्स को फैला दिया है, मतलब सीड्स को डाला जाता है जहाँ पे आपको फार्म एग्रीकल्चर फार्मिंग कर रहे हैं. फिर इरीगेशन में क्या, इरीगेशन इज अ सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ वाटर टू द प्लांट, वाटर गिविंग टू द प्लांट्स. सो मतलब लाइक स्प्रिंकल सिस्टम, ड्रिप इरीगेशन आप लोगों ने सुना होगा. ये सब इरीगेशन किया जाता है. फिर वीडिंग किया जाता है, फिर हार्वेस्टिंग किया जाता है. फिर आउटपुट जो रिज़ल्ट निकलता है वो क्रॉप्स, आप किसी का भी कर रहे हैं, क्रॉप्स का कर रहे हैं, दूध डायरी का कर रहे हैं, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, वूल कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का कर रहे हैं, वो आ जाता है. सो हम लोग समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग. कुछ फार्मिंग के टाइप्स भी होते हैं, वो क्या है देख लेते हैं. सब्सिस्टेंस
फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग, ये दो फार्मिंग होता है टाइप. So main types of farming depending upon the geographical condition, demands of produce, labor and level of technology. Second is subsistence farming, classified as intensive subsistence and primitive subsistence farming. So first we have to know in detail subsistence farming. So the type of farming is practiced to meet the needs of the farmer's family. So, intensive subsistence agriculture, the farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labors. Climate with a large number of days with sunshine and fertile soil permits growing of more than one crop annually on the same plot. So, the primitive subsistence agriculture are including shifting cultivation and nomadic herding. So, in shifting cultivation, a plot of land is cleared by felling the trees and burning them. The ashes are then mixed with the soil and crops are grown. After the soil loses its fertility, the land abandoned and the cultivator moves on to a new plot. Shifting cultivation is also known as slash and burn agriculture. इससे आप जो पता है कौन सा मतलब क्या उगा सकते हो, मतलब क्या प्रोडक्शन कर सकते हो. इससे आप पोटैटो और कैनवास को प्रोडक्ट कर सकते हो इस वाले कल्टीवेशन में. इसे होता ही है. सो नोमैडिक हर्डिंग, herdsmen move from one place to another with their animals for fodder and water, also defined routes. This type of movement arises in response to climate contracts and terrain. The main crop, rice, shifting cultivation are maize, yam, potatoes and cassavas. मैंने आपको क्या बोला था, पोटैटो, cassavas और ये माइस, ये सब आप प्रोडक्ट कर सकते हो, क्रॉप्स प्रोडक्ट कर सकते हो shifting cultivations. So other crops, wheat, maize, pulses and all seeds are nomadic herding. Sheep, camel, yak and goats are mostly commonly reared. They provide milk, meat, wool, hides and other products to herders and their families. So areas prevalent in the thickly populated areas of the monsoon regions of the south, southeast and east Asia. So shifting cultivation practiced in the thickly forested area of Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia and Northeast India. ये ज़्यादा कहाँ कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है, कहाँ ज़्यादा इसका जो प्रोडक्शन होता है इस कल्टीवेशन में. सो ये ट्रॉपिकल अफ्रीकाज में होते हैं, फिर साउथ ईस्ट एशिया में भी होते हैं और इंडिया में भी होते हैं. Nomadic herding practiced in the semi-arid and the arid regions of Sahara, as in Africa we कह सकते हैं, Central Asia and some parts of India like Rajasthan and Jammu and Kashmir. So commercial farming क्या है? हम लोगों ने सब पहले समझ लिया subsistence farming क्या होता है. अब commercial farming पे भी ध्यान दे देते हैं. So crops are grown and animals reared sale in market. The large area of cultivated and a large amount of capital is used to work done by machines. So crops are grown from commercial purposes. These areas are specially populated with the large farms spreading over hundreds of hectares. Several winters restrict the growing season and only a single crop can be grown like wheat and maize. और ये एरिया कहाँ कहाँ होता है प्रैक्टिस, ये टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका में होता है, यूरोप में भी होता है कॉन्टिनेंट में, और एशिया में कॉन्टिनेंट में भी होता है. मिक्स्ड फार्मिंग में क्या है, द लैंड इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रियलिंग लाइफ स्टॉक्स. सो ये कहाँ प्रैक्टिस होता है, यूरोप में होता है, ईस्टर्न यूएसए में होता है, फिर अर्जेंटीना में होता है, फिर साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस किया जाता है. लास्ट, प्लांटेशन एग्रीकल्चर.
type of commercial farming where a single crop is grown. Large amount of labor and capital is required. The produce may be processed of the farm itself or in nearby factories. The development of a transport network is thus essential for such farming. So the crops grown by this agriculture farming are tea, coffee, sugar cane, cashew, rubber, banana, or cotton. So it is practiced in major plantation found in tropical regions of the world, rubber in Malaysia, coffee in Brazil, tea in India and Sri Lanka. So the major crops are major food crops: wheat, rice, maize, and millets. Fiber crops: jute and cotton. Important beverage crops: tea and coffee. So the first is rice. The staple diet of the tropical and subtropical regions need the high temperature, high humidity, and rainfall grow best in alluvial clay soil, which can retain water. Leading producers of rice are China, followed by India, Japan, Sri Lanka, and Egypt in favorable climatic conditions. Like West Bengal, Bangladesh, 2 to 3 crops are grown in a year. Second is wheat. Requires moderate temperature, rainfall during the growing season, bright sunshine at the time of the harvest, thrives best well drained loamy soil, grown extensively in the USA, Canada, Argentina, Russia, Ukraine, Australia, and India. Grown in winter in India. So millets, known as coarse grain, can be grown on less fertile and sandy soils. A hardy crop that needs a low rainfall and high to moderate temperature and adequate rainfall. Jowar, bajra, and ragi are grown in India, also in Nigeria, China, and Niger. Fourth is maize requires moderate temperature, rainfall, and lots of sunshine. Needs well drained fertile soils. Grown in North America, Brazil, China, Russia, Canada, India, and Mexico. So fifth is cotton. Requires high temperature, light rainfall, 210 frost free days, and bright sunshine to grow best on black alluvial soil. Leading producers of cotton are China, USA, India, Pakistan, Brazil, and Egypt, main raw materials for the cotton textile industry. Sixth is jute, as known as the golden fiber, grows well on alluvial soil, requires high temperature, having rainfall and humid climate. Grown in the tropical areas, leading producers of jute are India and Bangladesh. Coffee requires a warm and wet climate and well-drained loamy soil. Hill slopes are more suitable for the growth of crop. Leading producers are Brazil, followed by Colombia and India. So agriculture development efforts made to increase farm production in order to meet the growing demand of increasing population. Achieved in many ways, such as increasing the cropped area, the number of crops grown, improving irrigation facilities, use of fertilizers, and high yielding variety seeds. Ultimate aim of agriculture development is to increase food security. Developing countries with large population practice intensive agriculture where crops are grown on small holding mostly for subsistence. Larger holdings are popular for commercial agriculture. So thank you everyone for watching. Meet up soon in the next video. Goodbye.